हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैंने कुछ असाइनमेंट दिया था कल, अपने सॉल्व किया होगा और मैं आपको हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज वी हैव टू सॉल्व इट एंड सेंड मी ऑन दैट नंबर विच आई विल प्रोवाइड फॉर द व्हाट्सएप ग्रुप. Please do it properly. If you have any queries, if you say that sir I am not able to solve the, for example question number 12, question number 13, तो उसका मैं आपको आंसर सॉल्व करके तो दूंगा, या कुछ ट्रिक्स है. इफ यू आर नॉट एबल टू फैक्टराइज इट, आई विल गिव द फैक्टर्स. तो थोड़ा कम्युनिकेशन बढ़ते जाएगा तो मुझे भी समझ में आएगा कि आपको क्या समझ रहा है और क्या नहीं समझ रहा. बिकॉज ऑनलाइन लेक्चर मीन्स इट इज़ द वन साइड डिलीवर्ड लेक्चर. एक्चुअली वी नीड द इंटरेक्शन, तो इसमें बहुत मज़ा आता है. बट अब अनफॉर्चुनेट कंडीशन है, इन दैट कंडीशन हम ऐसा ही ले सकते हैं. तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आई विल प्रोवाइड द अनदर प्लेटफॉर्म. व्हाट्सएप से आप मुझे सेंड कर सकते हैं आपके प्रॉब्लम्स. डेफिनेटली आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स. ओके, टुडे इन लास्ट टू लेक्चर्स वी आर टेकिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्विंग द सम क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. नाउ हम आज एक लेवल और बढ़ाने वाले हैं, वन स्टेप अहेड जाने वाले. टुडे वी टेकिंग द हॉट्स. मैं कुछ ही क्वेश्चंस ले लूँगा. ऑन दैट क्वेश्चंस okay we will cover the all questions of factorization. means कितना भी टफ क्वेश्चन आने दो एग्जाम में, we can solve it. okay, if you practice the today's questions and the questions having the same concepts, okay, जितने भी हम क्वेश्चंस आज लेने वाले इसी टाइप के अगर आप सेम क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको लेक्चर के लास्ट में क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूँ. वो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है. तो मुझे लगता है कि फैक्टराइजेशन के इसमें आपको कुछ भी डाउट नहीं आएगा. सो टुडे वी टेकिंग द हॉट्स क्वेश्चंस. हॉट्स का मीनिंग रहता है हायर ऑर्डर डेवलपमेंट थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस. हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस लेंगे हम, लेवल 1, लेवल 2 के क्वेश्चंस लेंगे. आई एम टेकिंग द सम क्वेश्चंस, वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट इट प्रॉपर्ली. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. So today's first question is x minus 1 upon 2x plus 1 plus 2x plus 1. आप अगर ध्यान दे रहे upon x minus 1 तो आपको समझ में आएगा what is the denominator of first is the numerator for second, and numerator of first is the denominator in a second term, is equals to 5 by 2 is equals to 5 by 2. Obviously x is not equal to 1 and minus 1 by 2, because if you put the value of x as a 1 we get the 0, here minus 1 by 2 we get the 0. That's why x is rather than these two values. Okay, so we take the question. So we have to listen these questions carefully. और जितने भी questions यहाँ पे solve करेंगे, सेम क्वेश्चन को आप पहले प्रैक्टिस करो घर पे एज योर ओन, एंड देन वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन व्हिच यू नॉट टेकन हियर. स्किप क्वेश्चन जो किए है मैं आपको लेक्चर के एंड में देने वाला हूँ, वो क्वेश्चन आप घर पे एंजॉय करो. ओके, सो एंजॉय इट. सो व्हाट इज द गिवन x minus 1 upon 2x plus 1 plus 2x plus 1 upon x minus 1 is equals to 5 by 2. okay, do the addition. ओके, एडिशन करना है मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे हम इसको. x minus 1 into x minus 1 is x minus 1 whole square plus 2x plus 1 into 2x plus 1, 2x plus 1 2x plus 1 whole square upon 2x plus 1 into x minus 1 is equals to 5 by 2 as it is. 5 by 2 as it is. Got it? Then we get the x square minus 2x plus 1. Then 2x plus 1 whole square का expansion आएगा 4x square plus 4x plus 1. expansion तो पता है ना, a plus b whole square upon, ये तो आना ही चाहिए क्योंकि हॉट सॉल्व कर रहे हैं हम. 2x into x 2x square, 2x into minus 1 minus 2x, 1 into x is x plus 1 into minus 1 is minus 1 is equals to 5 by 2. okay, then
x square plus 4x square, it is 5x square minus 2x plus 4x. ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन कर रहे, ग्रेटर नंबर का साइन ले रहे, 4 minus 2 is 2 and taking the sign of greater number. 1 plus 1 2 upon 2x square minus 2x plus x, it is minus x minus 1 is equals to 5 upon 2. Got it? Then by cross multiplication 2 into 5, मैंने जानबूझ के एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 28 in R.D. Sharma. It is, if you solve it, it is not converted into quadratic equation. तो that's why I am taking. अगर मैं ये क्वेश्चन स्किप करता था तो आपको घर में अगर सॉल्व करते थे तो आप परेशान हो जाते थे, सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा ही नहीं है. एक्चुअली दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. बाय मिस्टेक वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गए तो सॉल्व करेंगे आप. ओके, सो टेकन 5 2s are 10x square, 4 2s are 4x plus 2 2s are 4. Okay, 2 into 2 4x is equals to 5 2s are 10x square. Okay, minus 5x minus 5. Got it? Then 10x square get cancelled because x 0 भी नहीं है. So 4x minus 5x convert into plus 5x. Okay, sorry, it is 2 2s are 4, 2 2s are 4, minus 5 plus 4 convert into minus 4. So you get the 9x is equals to minus 9. So what is the value of x? X is equals to minus 1. Actually this is not a quadratic equation, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है actually. Okay, write it here. Then we take in the next question. Rest all are the quadratic equation. Okay. Means आपका confusion बढ़ना नहीं चाहिए. That's why I am taking the question. It is the question number 28. The next one question. X minus 4 upon x minus 5. I am taking the number here. R.D. Sharma से number ले लें. Okay. X minus 4 upon x minus 5 plus x minus 6 upon x minus 7 is equals to 10 by 3. Obviously, x is not equal to 5 and x is not equal to 7. इसको सॉल्व करेंगे. लिसन करेंगे. व्हाट इज द इक्वेशन? x minus 4 upon x minus 5 plus x minus 6 upon x minus 7 is equals to 10 by 3. Is equals to 10 by 3. Again cross multiplication करेंगे. So x minus 4 into x minus 7 plus x minus 6 into x minus 5 upon x minus 5 into x minus 7 is equals to 10 by 3. Is equals to 10 by 3. So you get the x into x, x square, x into 7 minus 7x, minus 4 into x minus 4x, minus into minus plus 28. Got it? Then again x into x, x square, x into minus 5 minus 5, minus 6 into x minus 6x, minus into minus plus 6 5s are 30. हम बहुत इजीली सिंपल वे से सॉल्व कर रहे हैं. x into x, x square, x into minus 7 minus 7x, minus 5 into x minus 5x, minus into minus plus 3 5 7s are 35 is equals to 10 upon 3. Then we get the x square plus x square, 2x square, minus 7x minus 4x minus 11x, minus 5x minus 6x minus 11x, that is minus 22x. 28 plus 30, it is the 58 upon x square
minus 12x 7 plus 5 plus 35 is equals to 10 by 3. ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 2 into 3 6x square minus 22 3s are 66x plus 58 3s are, it is the 30 का टेबल आता है ना, 3 8s are sorry हाँ 3 6s are 180. ओके, माइनस 6 करेंगे तो इट इज 174 आएगा. नहीं आता तो 3 8s are 24, कैरी 2, 3 5s are 15 plus 2. ओके, इज इक्वल्स टू 10 से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना. 10x स्क्वायर माइनस 120x प्लस 350. अरे गॉट इट, सो टेक इट. 10x स्क्वायर इसको लेंगे हम, इट इज 4x स्क्वायर. ओके, माइनस 66 कन्वर्ट इनटू प्लस 66. 120 से 60 सब्ट्रैक्ट करो, 60 आता है. दे 6 सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा 54. ओके, 350 से 170 सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा 180. 180 से 4 सब्ट्रैक्ट करो, इट इज 176. 176 is equals to 0. All the numbers are in the multiple of 2. Take the 2 common. So 2 in bracket 2x square minus 27x plus 88 is equals to 0. If you take 0 upon 2, it is 0. So you get the, क्या मिलेगा हमको 2x square. Therefore it is 2x square minus 27x plus 88 is equals to 0. मैंने कल बताया था आपको कि 2 into 88 करना है तो 2 into 88 को करेंगे 11 into 8. ओके, इसका एडिशन आना चाहिए बिकॉज कांस्टेंट टर्म हैज पॉजिटिव साइन, तो एडिशन आना चाहिए मिडिल टर्म. ओके, बहुत सिंपल है. 2 into 8 16, 16 plus 11 27. सो फैक्टर का पेयर क्या मिलता है 16 plus 11. 16 plus 11. So you get the therefore 2x square. Both the factor having middle term sign. 16x minus 11x plus 88 is equals to 0. Take the 2x common. Both the numbers of in the multiple of 2. 2x in bracket x minus 8 minus 11 in bracket x minus 8 is equals to 0. समझ रहा है ना. So first bracket x minus 8, second bracket 2x minus 11 is equals to 0. Therefore x minus 8 is equals to 0 or 2x minus 11 is equals to 0. So what is the value of x? 8, or x is equals to 11 by 2 minus convert into plus. 2 goes in the form of division. This is the solution of the given equation. Got it? Write it carefully. और इसको practice करना है आपको. Listen, practice करना है. Write it. Then we take in the next question. हम next question की बात करेंगे. आज के जितने भी क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन ट्विस्टेड क्वेश्चंस है. एक तो लेंदी है एंड देन इट नीड द एट वन लेवल आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू टैकल इट. ओके, the next question, question number 33. I am taking the repeat. इसके बाद आपको लगता है कि नहीं सर ये क्वेश्चंस ले लो तो आई विल टेक इन नेक्स्ट लेक्चर. मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. 33. 3 upon x plus 1 minus 1 by 2. जस्ट कॉम्प्लिकेशन क्रिएट किया उन्होंने, बहुत इजी क्वेश्चन है. इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3x minus 1. Obviously
x is not equal to minus 1 and 1 by 3. Correct. What is the question? 3 upon x plus 1 minus 1 by 2 is equals to 2 upon 3x minus 1. ये क्वेश्चन है. सो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड को लेंगे, हर एक क्वेश्चन में जैसा वैसा ही करेंगे, एंड वी टेकिंग दैट term which having the variable toward the left side. First of all do it. Therefore you get the 3 upon x plus 1, it has the positive sign, convert into negative. 2 upon 3x minus 1 is equals to minus 1 by 2, convert into plus 1 by 2. हो गया सो. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 into 3x, it is the 9x minus 3 minus 2 into x minus 2x minus 2 into 1 is minus 2, x into 3, it is 3x square, x into minus 1 minus x, 1 into 3, 3x minus 1 into plus 1 is minus 1 is equals to 1 by 2. Are you got it? Then you get the, समझ रहे हैं ना, x into 3x, 3x square, x into minus 1 minus x, 1 into 3x, 3x, 1 into minus 1 minus 1. Okay. So 9x minus 2x, 7x minus 5 minus 3 minus 2. Okay. Upon 3x square plus 2x, 3x minus x minus 1 is equals to 1 by 2. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2s are 14x minus 5 2s are 10. 1 से मल्टीप्लाई करें तो we have to write this term as it is, 3x square plus 2x minus 1. So we take 3x square plus 2x plus 14x convert into minus 14x minus 1 minus 10 convert into plus 10. Are you got it? So you get the 3x square minus 12x plus 9 minus 1 plus 10 is equals to 0. Minus 14 plus 2, it is minus 12x. Okay. 3 into 9 27. अब 27 के ऐसे फैक्टर ले लो, या यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं आप, 3 कॉमन निकालो, ऑल द टर्म्स आर इन द मल्टीपल ऑफ 3, इससे भी इजी हो जाएगा. सो यू टेकन 3 कॉमन इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. ओके. सो 3 goes in the form of division, 0 upon 3 is 0. So you taking therefore x square minus 4x plus 3 is equals to 0. अब 3 के फैक्टर ले लो जिनका एडिशन है 4, एक ही तो पी है, 3 1s are 3. So taken therefore x square minus 3x minus x plus 3 is equals to 0. Take the x common, x minus 3, take minus 1 common because we need the x minus 3. Okay. So minus 1 common लिया, sign get change, plus convert into minus. So first bracket आएगा x minus 3 और second bracket आएगा x minus 1 is equals to 0. Therefore x minus 3 is equals to 0 or x minus 1 is equals to 0. So what is the value of x? 3 or x is equals to 1. The solution of the given equation is x is equals to 3 or x is equals to 1. Write it. Next one. Question number 37. We are going toward the level 2. 37.
3√5 sorry, it is 3√5 x square. 3√5 x square. कुछ भी नहीं है, रूट नंबर दिया है. That's why they are transposing this equations into level 2. Easy है, कोई प्रॉब्लम नहीं. 3√5 x square plus 25 x minus 10√5 is equals to 0. इसमें क्लास में लेने में तो इतना मजा आता है इस क्वेश्चन को, तो अब क्या कर सकते हैं. 3√5 कोएफिशिएंट ऑफ x square is rather than 1 है, तो हमको क्या करना है, 3√5 into 10√5. साइन को बाद में देखेंगे. ओके, तो आएगा 30 into √5 5. 35 is 150. अब 150 कैसे फैक्टर्स लेना है, जिनका डिफरेंस आना चाहिए 25, क्योंकि कांस्टेंट हमको निगेटिव साइन है. 3√5 into 10√5 लिया, जो भी नंबर मिलता है 3 10s are 30, √5 into √5 is 5. 35 are 150. अब 150 के ऐसे फैक्टर ले लो जिनका डिफरेंस आना चाहिए 25, बिकॉज यहाँ पे निगेटिव साइन है. फैक्टर्स आर 30 and 5 itself. फैक्टर्स क्या है, 30 and 5 itself. Okay, 30 minus 5 is 25. So take a lead. 3√5 x square plus 25 x minus 10√5 is equals to 0. एक स्टेप में बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है. अब फैक्टर्स क्या आएंगे, 3√5 x square plus 30x minus 5x minus 10√5 is equals to 0. बस यहाँ पे थोड़ा at the time of, if you taken the common, we have to listen carefully and we have to concentrate it properly. At the time of, if you taken the common number, at that time you have to concentrate. Then rest things are very simple. Again, okay. So 3, this is also number in the form of 3. So क्या करेंगे हम, 3√5 कॉमन निकालेंगे. 3√5 x in bracket x. अब ये 30 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 10. ओके, अब ये 10 को क्या लिखेंगे हम, 2 into 5. अब इस 5 को क्या लिखेंगे हम, 3 into 2 into √5 into √5. समझ में आ रहा है. तो हमने क्या किया है, 3√5 कॉमन निकाला. 3√5 कॉमन निकाला है. What remains, 2√5. Okay, so minus plus 2√5. Okay, अब फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 3 2s are 6, √5 into √5 5, 6 5s are 30. Got it? minus 5 कॉमन निकालो. What remains, x minus convert into plus, 5 2s are 10, 2√5, क्योंकि 5 कॉमन निकाला है हमने. Are you got it? So is equals to 0. Is equals to 0. First bracket x plus 2√5 and 3√5 x minus 5 is equals to 0. Okay. 2√x plus 2√5 फिर से कॉमन निकाला है. क्या रहेगा, 3√5 x minus 5 is equals to 0. Again x plus 2√5 is equals to 0 or 3√5 x minus 5 is equals to 0. Therefore x is equals to minus 2√5 or x is equals to minus 5 convert into plus 5 and this goes in the form of division. एक को रैशनलाइज करेंगे. √5 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 5√5 अपॉन 3 into √5 is 5. समझ में आ रहा है आपको. √5 से मल्टीप्लाई कर दिया. 5√5 upon 3√5 into √5, it is 5. 5 get cancelled. So what is the value of x? X is equals to √5 upon 3. Therefore the solution of the given equation is minus 2√5 upon or
x is equals to root 5 upon 3. Got it? I repeat it, listen. Coefficient of x square is rather than 1. So, we take in the product of coefficient of x square and constant number. So, 3 root 5 into 10 root 5, इसका product आ गया 150. That is 30 into 5. So, 150 के ऐसे factors ले लो, जिनका subtraction आना चाहिए 25, because constant term has negative sign. Okay, so factors are 30 and 5. So, you're taking the 3 root 5 x square plus 30x minus 5 root 5x, so minus 5x minus 10 root 5 is equals to 0. Factors ले लिए. अब 3 root 5 x हमने कॉमन निकाला है, remains x. अब 30 का मतलब होता है 6 into 5. अब 6 into 5 को लिखेंगे हम root 5 into root 5. अब ये 6 को 3 into 2 करेंगे, so 3 root 5 कॉमन निकाला है, तो remains only 2 root 5. So that is 2 root 5. Okay, minus 5 कॉमन निकाला है, x minus convert into plus, 5 2s are 10, 2 root 5, and then rest is as it is. Are you got it? Write it properly. Write it. Taking one more question, और एक क्वेश्चंस लेंगे, रेस्ट क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है. क्वेश्चन नंबर 39. सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट वी टेकिंग फॉर प्रैक्टिस. फोर रूट 3 एक्स स्क्वायर, 4 root 3 x square plus 5x minus 2 root 3 is equals to 0. Again वही करेंगे, ओके. 4 root 3 into 2 root 3, 4 2s are 8, root 3 into root 3 3, 8 3s are 24. आ गया समझ में? क्या आ गया नंबर? 4 root 3 into 2 root 3, it is 4 2s are 8, root 3 into root 3 3, it is 24. क्या नंबर मिल गया हमको? 24 मिल गया. अब 24 के ऐसे फैक्टर ले लो जिनका डिफरेंस आना चाहिए 5, अगेन कांस्टेंट टर्म को निगेटिव साइन है, तो क्या मिलेंगे? फैक्टर्स क्या आएंगे? 8 3s are, तो फैक्टर तो वही आ रहे, 8 into 3, so फैक्टर्स तो वही आ रहे, फैक्टर्स तो मिल रहे हमको. 8 3s are 24, 8 minus 3 is 5, 8 has positive sign, 3 has negative sign. ग्रेटर फैक्टर को मिडल टर्म का साइन देना है, स्मॉलर फैक्टर को अपोजिट साइन देना है. सो टेकिंग 4 root 3 x square plus 5x minus 2 root 3 is equals to 0. Then factors are 8 and 3. 4 root 3 x square, greater factor has middle term sign, smaller factor has opposite sign. Root 3 is equal to root 3 is equals to 0. Okay, both the numbers are in the multiple of 4. Take the 4x common in bracket, root 3x plus 2. So take the minus 3 common, yeah, root 3 common निकालो, minus root 3. So you get the root 3x, because 3 का मतलब होता है root 3 into root 3. 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, root 3 into root 3, we taking 1 root 3 common, so minus root 3 in bracket root 3x minus convert into plus 2 is equals to 0, because we taking root 3 common. Got it? Okay, so first bracket root 3x plus 2 and second bracket 4x minus root 3 is equals to 0. Product of two brackets is 0, so first one is 0, that is root 3x plus 2 is equals to 0,
और 4x minus root 3 is equals to 0. Therefore, x is equals to minus 2 upon root 3 or x is equals to root 3 upon 4. This is the solution of the given equation. X is equals to minus 2 upon root 3. X is equals to root 3 upon 4. Yes student, please practice it. फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा टफ जाएगा, बट इफ यू प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू इजी, और हमको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी. ओके, होप सो कि आपने एंजॉय किया होगा. इसके मैं जितने भी क्वेश्चन हमने स्किप दिए मैं असाइनमेंट में आपको दूंगा, आप वो सॉल्व कीजिए. जिसमें आपको प्रॉब्लम है प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिए, सर दिस क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर में प्रॉब्लम है, आई विल सॉल्व इट इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे.